मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जी। क्या हाल चाल है मेरे? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक आप ठाक सुनाएं सर सर जी, जी, आप आपका क्या हाल है? सेहत भी ठीक है सब लोगों की। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं। हाँ, शुक्र अल्लाह पाक का। तो देख रहा था आज बच्चे ट्राई कर रहे थे, टाइपिंग के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे थे, तो हमने कोशिश की, आज हमारी तो निकली कोई नहीं है यार। नहीं सर, बड़ी टाइपिंग है नहीं आपकी। फिर सर, आप सर जी ये तो ऐसा कितना शर्मिंदा हो कर रहे हैं गया? आप। ये सर जी आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं ऐसा कह नहीं, के। शर्मिंदा क्यों? मैं 50 की स्पीड सारी मेरा शायद थी, पता नहीं 50 थी या 49 थी, ये राउंड अबाउट थी मेरा इसके शायद वो। जी सर, 49 थी। हाँ, 49। सर बड़ी जबरदस्त है। हमारी क्लास में अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी 49 भी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, सर ऐसे भी। आपने तो कब की हुई है? आप तो टाइपराइटर के दौर के हैं सर। और मेरा दिल किया, मैंने कहा यार बच्चे इतने दिन निकाल रहे हैं, भला मैं तो चेक करूं मेरी कितनी निकलती है। तो पहली दफा ही की थी मैंने, वो उसी तरह मैंने सेंड कर दिया आपको। नहीं सर, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त टाइपिंग सर। चलें और सबसे बात है जबरदस्त वही है कि एक्यूरेसी बड़ी थी उसमें। हाँ, मेरा ख्याल शायद एक गलती थी। मेरा ख्याल गालबन दो एरर थी उसके अंदर। जी सर। एक लास्ट पे हुई तो मैंने स्टॉप कर दी वहां पे जाके। तो जी सर। एक उससे पहले शायद वो क्या लफ्ज था पता नहीं, वो उसके अंदर एक इजाफी की आ गई थी कोई। तो जी सर। एन डालना था, साथ पता नहीं के डाल गया था या डी डाल गया था, कोई इस तरह की थी प्रॉब्लम जो है। तो यही कुछ था जी। भाई, मैंने कहा चले हम भी आप पार्टिसिपेट हो जाते हैं जरा इनकी टाइपिंग में। जी सर। चलें ठीक है, तो आज का क्या प्रोग्राम, क्या लिखना था हमने भाई? सर जी एडिटोरियल और 700। 700 और एडिटोरियल लिखेंगे आज। साथ थोड़े से कुछ जो पैराग्राफ ऑफिशियल के भी डाल लें कि नहीं? जी 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 सर सर। जी ठीक है। चलें ठीक हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि तीनों का एक मिक्सअप सेटअप बन जाए जरा ना। तो डेली बेस के ऊपर जरा इसको करते जाएं जब तक तो एग्जाम नहीं होते, इसके टेस्ट नहीं होते। सर। जी सर ठीक है। हाँ, तो रेडी हो जाएं जरा सारे लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सुनता हूं जरा मैं। तो लिखेंगे जरा नेक्स्ट जी सर। पैराग्राफ को। एज वी ऑल लर्नड एट स्कूल कॉमा आवर अर्थ इज ऑलवेज टर्निंग अवे फ्रॉम द वेस्ट कॉमा and the nearer a place is to the east, the earlier is the hour of day break at that place, full stop. If, comma, for example, comma, we were living in a country at a point on the earth where the distance round the world is as great as it can be, comma, and we were to leave that country and go to another country which is, comma, let us say, comma, a little over 1,000 miles more distant round the world, we would find that day dash break was an hour earlier in our new home than it had been in our old home, full stop. If we moved only 500 miles towards the east, we would find the difference to be only half an hour, comma, and if we moved only 50 miles, we would find the difference to be as little as 3 minutes, full stop. If we look at a table of lighting up times, we note that these times differ widely for different parts of the same country, full stop. तो वलीद पढ़ दें जरा इसको भाई। जी सर जी। As we all learned at school, comma, our earth is always turning away from the west, comma, and the nearer the place is to the east, the earlier is the hour of break and that place, full stop. If, comma, for example, comma, we were living in a country at a point on the earth where the distance round the world is as great as it can be, comma, and we were to leave that country and go to another country which is, comma, let us say a little or 1,000 might, we would find that that had dash break was our
earlier in our new home then those it मुझे had यहाँ पे been then it had been near in our old home full stop. If we moved only 500 millions miles towards the east, we would find the difference to be only half an hour comma, and if we moved only 50 miles, we would find the difference to be as little as 3 minutes full stop. If we look at a table of lighting up times, we note that these times differ widely for different parts of the same country full stop. चलो ठीक है शाबाश, कुछ चंद गलतियां की हैं। एक जगह पे ए प्लेस आया था तो आपने ए को दी पढ़ दिया, एक जगह पे लिविंग आया था तो आपने लिविंग पढ़ दिया उसको। मुझे तो समझ लिविंग की आई, मे भी आपने लिविंग ही पढ़ा उसको। फिर एक जगह पे लफ्ज ओवर आया था तो आपने आवर पढ़ दिया, फिर एक जगह पे आर आया था तो उसको आपने आर पढ़ दिया या आवर पढ़ दिया, गलत पढ़ा इसको भी। सर ये फिर एक जगह पे सर ये सही पढ़ा लफ्ज हाँ। दैन आया था, दैन को दिस पढ़ा था, उसके आगे फिर मैंने बता दिया था आपको दैन इट हैड बीन। यहाँ तक आपकी कुछ 4-5 गलतियां ये बनी हैं, तो कोशिश करें जरा इन गलतियों को सॉल्व करने की। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखवा लिखिएगा जरा। Now we will say that in the first of these divisions, New Year's Day begins full stop. R by R, New Year's Day reaches and passes through one of the 24 divisions until at the end of 24 hours. It is in the last division, comma, and the second of January is beginning full stop, but the last division, comma, 2, comma, must have its full day, and 24 hours must pass before New Year's Day really comes to an end and dies in the last of the 24 divisions full stop. The 1st of January lives for 48 hours full stop, but while the 1st of January has been continuing its life in this way, the 2nd of January has been moving round the world full stop. The first hour of the 2nd of January reaches the last division just as the 24th hour of the 1st of January dies, comma, and at the same moment, the 3rd of January begins in the first division full stop. And so we are faced with the strange truth that while a day lasts 48 hours, there is between the 1st and 3rd of January no break at all, full stop. तो अरसलान आप पढ़ेंगे इसको भाई। जी सर। Now we will say that in the first of these division, New Year's Day begins our by our New Year Day reaches and passes through one of the 24 divisions until at the end of 24 hours it is in the last division, and the 2nd of January is beginning, but the last division, comma, 2, comma, most must have its full day, and 24 hours must pass before New Year's Day really comes to an end and dies, and the last of the 24 divisions, first of the January lives for 24 hours, full stop. But while the 1st of January has been continuing its life in this way, the 2nd of January has been moving round the world, full stop. The first hour of the 2nd of January reaches the last division just as the 24th hour of the 1st of January dies, comma, and at the same moment to 3rd of January begins in the first division, and so we are Faced. faced with the strange truth that while a day lasts 48 hours, there is between the 1st and 3rd of January no break at all, full stop. चलें ठीक है शाबाश। एक तो मैंने फेस्ट का लफ्ज आपको बताया, इस तरह 2 जगह पे आपने एस की गलतियां की हैं। एक डिवीजन आया था पहली रो के अंदर ही लफ्ज था आपका दीज डिवीजन्स, तो आपने एस नहीं पढ़ा था इसके साथ।
इसके दूसरी लाइन में अगर जाएंगे तो न्यू ईयर्स आया था, तो यहाँ पे एस नहीं पढ़ा आपने। ये दो जगह पे तो आपने एस की गलतियां की, एक वो लफ्ज फेस्ट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी आपको, और एक जगह पे मुझे डाउट है शायद कुछ मिसिंग हुई थी, मेरे से समझ में नहीं आई। तो ये सारा कुछ आपसे क्लियर हो जाएगा जब रिकॉर्डिंग आएगी, तो ऊपर पैरा भी होगा, फिर आप पीछे से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी इसकी कि क्या हुआ था। तो नेक्स्ट लिखिए जरा पैराग्राफ को। सर These thoughts come to the mind upon reading a recently published book in which the writer tells in outline the story of the lives of 15 great men, full stop. From the many remarkable men who have lived during the past 500 years, the writer has taken those men who, by their thought and by their labor, were able to discover a great principle, some deep truth about the laws of nature, which had not before been known, dash men who in this way added greatly to the knowledge and learning of the world, and so took all men one big step forward in the long march towards a better understanding of the forces which govern our world, full stop. तो कौन पढ़ना चाहेगा इसको भाई? जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उसी लूंगा मैं यार। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ूँ सर? These thoughts come to the mind upon reading a recently published book in which the writer tells in outline the story of the lives of 15 great men, full stop, from the many remarkable men who have lived during the past 500 years. The writer has taken those men who, by their thought and by their labor, were able to discover a great member, some deep truth about the principle, some deep truth about the laws of nature which had not before been known, dash men in this way added greatly to the knowledge of learning of the world, and so took all men one big step forward in the long march towards a better understanding of the forces which govern our world, full stop. ठीक है शाबाश, आपने 3 गलतियां की हैं। एक तो मैंने बता दी, प्रिंसिपल वाली गलती मैंने ठीक करवा दी आपको। एक जगह पे लफ्ज आया था तो हु आपने नहीं पढ़ा था ये लफ्ज। एक जगह पे एंड आया था तो ऑफ पढ़ दिया, एंड लर्निंग ऑफ ही था, आपने एंड लर्निंग पढ़ दिया था। तो ये 3 गलतियां आप हुई हैं। ठीक, अच्छा पढ़ लिया। नेक्स्ट लिखते हैं जरा। The fireflies were out in their hundreds, and their lights came and went as they flew along, full stop. We could follow their course by watching the coming and the going of their little lights, full stop, when we first got out of the car and began to walk. The thought that everything was still and soundless, but as we grew used to the night, we found that all was sound and movement, full stop. Masses of little living things were on the move, and they all in turn gave a voice to their desires or needs as they went on their way, perhaps looking for food, perhaps moving for no reason at all except the desire not to be still, full stop. अजीमा पढ़िए जरा इसको बेटी। जी सर।
The fireflies were out in their hundreds, and their lights came and went as they flew along. Full stop. We could follow their course by watching the coming and the going of their little lights. Full stop. When we first got out of the car and began to walk, the thought that everything was still and soundless, but as we grew used to the night, we find that all was sound and movement. Full stop. Masses of little living things were on the move, and they all in turn gave voice to their desires or needs as they went on their way, perhaps looking for food, perhaps moving for no reason at all except the desire not to be still. Full stop. चलें ठीक है शाबाश। ये गलती जो मैंने नोट की, आपने ग्रो पढ़ा था, मुझे जो सुनाई दिया ग्रीव लफ्ज था वो वाला। सर जी ग्रीव, जी सर आपने ग्रीव को बगाड़ के या तो पढ़ा है तो ये प्रॉब्लम हुई है, बाकी ठीक है शाबाश, अच्छा पढ़ लिया आपने। जी सर। नेक्स्ट लिखेगा पैराग्राफ को, इट वाज डेंजरस कॉमा, पीपल सेड कॉमा टू वॉक अबाउट आफ्टर नाइट हैड फॉलन, फुल स्टॉप। एनिमल्स वर आउट अंडर कवर ऑफ द नाइट, comma, and would not be seen until it was too late, full stop. We read these statements and think carefully about them, comma, and at first it seems that the statements cannot be true, comma, that we cannot seriously be expected to believe them, full stop. Then, comma, perhaps, comma, we remember some of the things we were told as children and which we have always believed to be true, full stop. As children, we learned that many of the little points of light which appeared above us at night are really great bodies which are millions of miles away from the earth, full stop. Light, comma, we were told, comma, moves at the rate of about 186,000 miles a second, comma, but so far distant are these bodies from us that the light which we see coming from them is the light which left them thousands, comma, and in some cases millions, comma, of years ago, full stop. अब्दुल्ला पढ़ दीजिए जरा इसको। जी सर जी। It was dangerous, comma, people said, comma, to walk about after night had fallen, stop, animals were out under cover of the night, comma, and would not be seen until it was too late, full stop. We read these statements and they think carefully about them, comma, and at first it seems that the statements cannot be true, comma, that we cannot seriously be expected to believe them, full stop. Then, comma, perhaps, comma, we remember some of the things we were told as children and which we have always believed to be true, full stop. As children, we learned that many of the little points of light which appeared above us at night, which really are really great bodies which are millions of miles away from the earth, full stop. Light, comma, moves at the rate of about 26,000 miles of millions of second, comma, but so far distant which are these bodies from us that the light which we see coming from them, full stop. Light which left them thousands, comma, and in some cases millions, comma, of years ago, full stop. चलें ठीक है शाबाश। एक जगह पे तो आपने लफ्ज ठीक कर लिया था, विच को आर पढ़ा था, फिर उसको आपने ठीक कर लिया। दूसरी जगह पे आपने ठीक करके फिर गलत कर दिया। 186,000 माइल्स था, मिलियन नहीं था ये वाला, ये माइल्स की बात हो रही थी, तो माइल्स ही था लफ्ज वाला। तो नेक्स्ट लिखिएगा जरा पैराग्राफ को भाई। The relation of time to distance and the relation of immediate time to time as a whole are subjects in which people grow more and more interested, full stop. Two interesting plays have been written around the idea that everything that has happened in the past is still in existence, comma. The point made by the plays being that a person
who has a certain special sense, highly developed, can go back into the past and experience old and past events, full stop. But interesting as these ideas may be, comma, there is an other and much more usual point of view from which to consider time, full stop. हाँ जी वलीद पढ़ दें जरा इसको. The relation of time to distance and the relation of immediate time to time as a whole are subjects in which people go more and more interested. Full stop. To interesting plays have been written around the idea that everything that has happened in the past is still in existence, comma, the point made by the plays being that a person who has a certain special sense highly developed can come go back into the past and experience old and past events, full stop. But interesting as these ideas may be, comma, there is another and much more usual point of view from which to study a word consider time, full stop. ठीक है शाबाश. दो गलतियां आपसे हुई हैं. एक लफ्ज कैन आया था, पहले कैन गो बैक पढ़ा, फिर आपने कम गो बैक पढ़ दिया. वही गलती हुई है, अभी कंसीडर की गलती हुई है. ठीक है शाबाश ना भाई. तो नेक्स्ट लिखते हैं जरा भाई. But we cannot stop our questioning at this interesting point, full stop. We go further and ask, comma, for how long is the earth likely to continue in its present state, question mark. From the answer given to us, it is clear that we need not fear the immediate end of the world, full stop. There is every reason to believe that life will be possible on earth, comma, in very much the same forms as at present, comma, for millions of years to come, full stop. Man is but a baby, comma, just starting out in life, full stop. शिबाना कौसर आप पढ़े बेटे इसको. But we cannot stop our questioning at this interesting point. First, we go further and ask, comma, for how long as the earth likely to continue in its present state, question mark. From the answer given to us, it is clear that we need not fear the immediate end of the world. First of there is every reason to believe that life will be possible on earth, comma, in very much the same forms as it present, comma, for millions of years to come. First of man is but a baby, comma, just starting out in life. ठीक है शाबाश. ये गलती आपने की है. एट प्रेजेंट था तो आपने इट प्रेजेंट पढ़ा है एज एट प्रेजेंट, तो यही आपकी एक गलती हुई है. तो ठीक है शाबाश. तो नेक्स्ट जरा मैं कुछ ऑफिशियल के पैराग्राफ लिखवाने लगा हूं जरा, उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल की तरफ आ रहा हूं. तो रेडी. In order to avoid prolonged suspension of government servants and employees of autonomous bodies, comma, it has been decided that every secretary to government of West Pakistan should get the facts of each case from his office and authorities subordinate to him, and review it and try to either dispose of the case or, if possible, comma, reinstate the person, full stop. The cases which cannot be finalized by the administrative secretary, comma, should be discussed with the additional chief secretary, comma, services and general administration department, full stop. Information about such cases should be sent to services and general administration department in the pro forma given below, full stop. The date of the meeting will be communicated to each administrative secretary after the pro forma is received, full stop. तो ये पढ़ के सुना दें मुझे ये मुदस्सर.
In order to avoid prolonged suspension of government servants and employees of autonomous bodies, it has been decided that that every secretary of government of West Pakistan should get the facts of each case from his office and authorities subordinate to him and review it and try to either dispose of the case or if possible, reinstate the person. Full stop. The cases which cannot be finalized by the administrative secretary, should be discussed with the additional chief secretary, services and general administration department. Full stop. Information about such cases should be sent to services and general administrative department in the performa given below. Full stop. Uh, 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 the of the meet the date of the meeting will be communicated to each administrative secretary after the performa uh, is received. Full stop. ठीक है शाबाश। ये तो अभी एक मैंने लफ्ज बताया आपको, 2 लफ्ज छोड़े थे जो आपसे नहीं पढ़े जा रहे। दी डेट्स मैंने ये बता दिया। ऊपर एक गलती और आपने की है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट था तो 2 को भी आपने ऑफ पढ़ दिया था, तो इसके अलावा एक गलती सिर्फ आपने और की है। तो ठीक है शाबाश, नेक्स्ट लिखिएगा जरा। When the initial appointment is for a period not exceeding 6 months, it may be made without consulting the commission in the first instance, no matter whether the appointment is made by government or by an authority subordinate to government, but consultation with the commission should be dispensed with only if it is necessary in the public interest that the appointment should be made immediately. Full stop. This power of making an appointment without consulting the commission should be exercised with care and discretion. Full stop. If the appointment is not immediately necessary or there is time to consult the commission before making it, the commission should first be consulted about the appointment. Full stop. तो ये फौजिया पढ़ दें जरा इसको। जी सर। When the official appointment is for a period not exceeding 6 months, full stop, it may be made without consulting the commission for the first instance, no matter whether the appointment is made by government or by a authority subordinate to government, full stop, but consultation with the commission should be dispensed with only if it is necessary in the public interest that the appointment should be made immediately, full stop. This power of making appointment without consulting the commission should be exercised with care and discretion, full stop. If the appointment is not immediately necessary or there is time to consult the commission before making it, the commission should first consulted about the appointment, full stop. अच्छा बेटे, मैं बताता हूँ। अभी तो एक ने गलती आपने की है, बी छोड़ दिया फर्स्ट के बाद कंसल्टेंट से पहले जो है। तो एक तो गलती ये वाली हुई। एक इससे ऊपर डिस्पेंस्ड आया था तो आपने डी नहीं पढ़ा था, डिस्पेंस पढ़ा था। दूसरी गलती वो थी। तीसरी गलती एन अथॉरिटी आया था तो आपने ए अथॉरिटी पढ़ा, वावल का भी ख्याल नहीं किया आपने। तो ये 3 गलतियां हुई। ठीक है शाबाश ना, नेक्स्ट टाइम केयर कीजिएगा जरा इन चीजों से। सर जी जी सर 20 मिनट के लिए छुट्टी चाहिए। जी आप चले जाइए। नेक्स्ट लिखिए जरा पैरे को। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टूवर, the head of an attached department should submit his tour program to government through the secretary concerned, and should leave only after the approval of government has been given, full stop. The present practice of requiring all the regional and district officers of the area to be present when the head of an attached department visits a place should be given up, full stop. Ordinarily, only the officer in immediate charge of a project or the area visited
should be required to be present, full stop. हाँ भी अपना ये पढ़ के सुनाएंगे मुझे। अख्तर आप पढ़ दीजिए जरा इसको भाई। जी सर मैं पढ़ दूं? राणा अमर पढ़ दें जी। Before the proceeding on a tour, the head of attached department and submit is a tour program to go through the secretary concerned, should leave only after the approval of GOVT has been given a full stop. The present practice of requiring of the regional and district officers of the order to be present when the head of attached department visits a place should be given up full stop. Ordinarily, only the officer in immediate charge of a project or the order visited should be required to be present full stop. राणा अमर आपने 6 गलतियां मैंने नोट की आपकी, तो ये आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएगी सारी गलतियां आपने कहाँ कहाँ की। मैं आपको बता भी देता हूँ। एक जगह पहली लाइन के अंदर शुड की गलती की आपने, शुड सबमिट था ये लफ्ज। दूसरी जगह पे लफ्ज लीव आया था जो आपने इसको लिव पढ़ा था। तीसरी जगह पे जो आपने गलती की है आल को ऑफ पढ़ दिया था। चौथी जगह पे लफ्ज आपने जो गलती की है वो एरिया को ऑर्डर पढ़ दिया था। फिर 2 जगह पे ये गलती की आपने, 2 जगह पे एरिया आया था, दोनों जगह पे ऑर्डर पढ़ा था आपने। और एक जगह पे आपने एन अटैच डिपार्टमेंट था तो एन को नहीं पढ़ा आपकी। इस तरह मिला के टोटल आपकी ये 6 गलतियां हुई हैं। इन चीजों का ध्यान दें जरा भाई। नेक्स्ट लिखेंगे पैराग्राफ को भाई। जी सर। It appears that these instructions are not being followed and these statements are not received in the prescribed form in accordance with the existing instructions, full stop. The last date prescribed for submission of these statements, 10th of each month, is also not being adhered to, full stop. The result is that the lists cannot be printed in time, full stop. In order to ensure the systematic preparation and maintenance of lists of debarred personnel, it is requested that the requisite information in respect of the department / offices, including the subordinate offices, may be furnished in the prescribed form, arranged alphabetically, punctually by the 10th of each month, full stop. मुबीन पढ़ दीजिए जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। It appears that these instructions are not being followed and these statements are not received in the prescribed form in accordance with the existing instruction, full stop. The last date prescribed for submission of these statements, 10th of each month, is also not being adhered to, full stop. The result is that the lists cannot be printed in time, full stop. In order to ensure the systematic preparation and maintenance of lists of debarred personnel, it is requested that the requisite information in respect of the department / offices, including the subordinate offices, may be furnished in this prescribed form, alphabetical and punctual by the 10th of each month, full stop. बेटे फॉर्म के बाद जरा देखिए क्या लफ्ज पढ़ा आपने। अल्फाबेटिकल सर। हाँ बेटे, इससे पहले लफ्ज अरेंज्ड आपने छोड़ दिया था, ये एक ही गलती हुई आपसे, टोटली नहीं एरर फ्री जा रही थी आप। तो ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट लिखिए जरा पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ होगा, उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल की तरफ आ रहा हूँ। It has, therefore, been decided, in consultation with the Comptroller and Auditor General of Pakistan, that a liability register in the enclosed form may be introduced in the office of each drawing and disbursing officer, in which all anticipated liabilities should be entered, full stop. A similar register for the purpose of watching awaited debits and credits
from various PWD divisions, comma is already being maintained in every public works division, full stop. The heads of the offices should ensure that their budget proposal include provision of funds for liquidating all liabilities which could not be cleared within a financial year, full stop. तो इसानुल्लाह आपसे लिखा गया ये पैरा जी सर पढ़े. It is therefore being decided in consultation with the Controller and Editor General of Pakistan that a liabilities register in the enclosed form may be introduced in the office of each drawing and disbursing officer, in which of anticipated liabilities should be entered to stop the similar register for the purpose of watching awaited awaited debits and credits from various PWD division. सर एक वर्ड यहाँ पे जो है ना वो समझ नहीं आ रहा था, आवाज is already था यहाँ पे. has already being maintained in every public यहाँ पे था सर, यहाँ पे सर works division. The public and works division, the head of an office should ensure that their budget proposal include provision of office for liquidating of liabilities which could not be cleared within a financial year to start. चले ठीक है, शाबाश, आपने गलतियां तो कर दी हैं. एक जगह पे आल को ऑफ पढ़ दिया, एक जगह पे ए को दी पढ़ दिया, एक जगह पे वो मैंने बताया था इज जो था जिसको आपने बाद में हैज पढ़ दिया था, ये गलती की आपने. वर्क डिवीजन आपसे वैसे वो प्रॉब्लम हो गई थी. ऑफिस का आपने ऐसे नहीं पढ़ा तो ऑफिस पढ़ दिया था, हेड ऑफ द ऑफिस. तो लास्ट में गलती जो आपने फिर आल की किया, आपने इसको ऑफ पढ़ दिया. दो जगह पे आपने आल की गलतियां की जिनको ऑफ पढ़ा आपने. एक जगह पे दी को आपने ए को दी पढ़ दिया है, तो एक जगह पे इसको आपने हैज पढ़ दिया है. एक जगह पे अवेटेड लफ्ज आया था तो ये अवेटेड आपसे नहीं पढ़ा जा रहा था, तो ये गलतियां थी जो मैंने आपको बता दी. रेडी भाई अपने एडिटोरियल के लिए. लास्ट वीक कॉमा आफ्टर द डे लॉन्ग हाई ड्रामा सराउंडिंग the cable chair rescue, a press release from the Tehreek-e-Taliban Pakistan began doing the rounds on social media, full stop. It praised the local residents who were part of the rescue mission, and announced a cash award for them, full stop. So bizarre is the press release that people such as myself thought it was a fake, full stop. However, since then, I have spoken to journalists who cover these issues and they confirm it is a genuine, full stop. तो हाँ भी जवाब पढ़ दे जरा इसको. जी सर, वालेकुम सलाम. Last week, after the day-long high drama surrounding the cable chair rescue, a press release from the Tehreek-e-Taliban Pakistan began doing the rounds on social media, full stop. It praised the local residents who were part of the rescue mission and announced a cash award for them, full stop. So desire is the so be, bizarre is the press release that people such as myself thought it was a fake, full stop. However, since then, I have spoken to journalists to cover these issues and they confirm days genuine, full stop. It is a genuine. It is a genuine. और वो लफ्ज हो भी आपने गलत कर दिया, वो भी गलत पड़ा जर्नलिस्ट के बाद आपने. तो ये दो गलतियां आपसे, बल्कि तीन गलतियां हो गई हैं ये वाली. तो ठीक, अच्छा पढ़ लिया. नेक्स्ट लिखवा रहा हूँ जरा मैं. अच्छा, एक लफ्ज आपने बिजारे, पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, बिजार. क्या लफ्ज है यार, बिजार? इसका मतलब होता है मुनफरद. मुनफरद तो कहते
इसको बिगाड़ के नहीं पढ़ना जरा। जी सर। तो नेक्स्ट जी लिखे सर। पैराग्राफ को भाई। इन फैक्ट colleagues point out that the TTP in its present reincarnation seems to be doing a lot more than just enjoying the sophisticated weaponry left behind by the Western forces during their quick exit from Afghanistan colony. The organization has also learned the importance of winning over the public and are now trying to craft a social agenda full stop. Apparently, it even released a statement on the migrants ship that went down full stop. तो ये पैरा मुझे पढ़ के सुनाएंगे जरा। राशिद महमूद आप पढ़ दीजिए जरा इसको। जी सर। In fact, colleagues, point out that the Tehreek-e-Taliban Pakistan in its present reincarnation seems to be doing a lot more than just enjoying the sophistically weaponry left behind by the Western others during their quick exit from the Afghanistan. The organization has also learned the importance of winning over the public and are now to trying the craft a social agenda full stop. Apparently it different it apparently it been released a statement on the migrants ship that went down full stop. अच्छा, ये तो एक तो इट के बाद इवन रिलीज्ड आपने छोड़ दिया, ये नहीं पढ़े आपने। ऊपर एक जगह पे आपने सोफिस्टिकेटेड लफ्ज आया था तो आपने सोफिस्टिकेटिंग ये पढ़ दिया था। इस तरह से गलतियां की आपने। तो ये 3-4 गलतियां आपसे मैंने नोट की आपकी। तो नेक्स्ट लिखवा रहा हूँ जरा। अच्छा, मुझे स्पेलिंग बता दिए, सोफिस्टिकेटेड के स्पेलिंग क्या होते हैं? जी सर, SOPHISTICATED, नफीस। हाँ, नफीस को कहते हैं ये। रिलीज्ड का क्या स्पेलिंग होते हैं? RELEASED, रिलीज जारी करना। अच्छा, तो या छोड़ देना है, जारी कर देना या छोड़ देना। अफगानिस्तान के क्या स्पेलिंग होते हैं? AFGHANISTAN। जेनियन के क्या स्पेलिंग होंगे? GENION। GENUINE। जी सर। रीइंकार्नेशन के क्या स्पेलिंग है? जी सर। रीइंकार्नेशन। REINCARNATION। और मुझे बताएं स्पेलिंग बिजार के क्या स्पेलिंग होते हैं? सर BIZZARRE, मुनफिद। अच्छा, तो माइग्रेंट्स के क्या स्पेलिंग है? माइग्रेंट्स MIGRANTS, माइग्रेंट्स सर हिजरत। महाजर को कहते हैं करने वाले। महाजरीन जी। महाजरीन जी। तो लिखिए जरा न्यू पैरा। Those familiar with the issue say the group is trying to emulate the Afghan Taliban in organizational matters and reaching out to the populace full stop. So far, there is little indication they are making any headway in winning over the people full stop. However, this may change, as discontent in the province is growing due to several reasons, according to those who keep a close eye on the situation, full stop. A major factor is the security situation, which continues to deteriorate day by day, full stop. Incidents take place on a daily basis, even though not all of them are, fortunately, big enough to catch the attention of the press, full stop. Those familiar with the issue say the group is trying to emulate the Afghan Taliban in organizational matters and reaching out to the populace, full stop. So far,
there is a little indication there are making any headway in winning over the people, full stop. However, comma, this may change, comma, as a discontent in the province is growing due to several reasons, according to those who keep a close eye on the situation, full stop. A major factor is the security situation, comma, which continues to deteriorate day by day. Incidents take place on a daily basis, comma, even though not all of them are comma comma Unfortunately. unfortunately, comma, big enough to catch the attention of the press, full stop. ठीक है, शाबाश। एक अभी मैंने गलती ठीक करवाई आपकी, फॉर्चुनेटली की। इसके अलावा एक आपने और गलती की थी, इंडिकेशन के बाद दे आर आया था, तो देर आर आपने पढ़ा था, शायद सुनाई देने के अंदर प्रॉब्लम हुई आपको। तो दे आर था, देर आर नहीं था वो वाला लफ्ज। तो यही दो गलतियां आपकी। तो ठीक है, शाबाश। मुझे स्पेलिंग को बताइए, डिटेरियोरेट के स्पेलिंग मीनिंग क्या होंगे? DETERIORATE। क्या मीनिंग होता है इसका? काफी बगाड़ देना। डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है? बगाड़ना, खराब करना। फॉर्चुनेटली के क्या स्पेलिंग है? FORTUNATE। फॉर्चुनेटली ना? FORTUNATELY। ऑर्गेनाइजेशनल। ORGANIZOTIONAL। पॉपुलेस। POPULALASE। CE आएगा, एस नहीं आएगा भाई, CE। पॉपुलेस का मतलब क्या होता है? आबादी को कहते हैं ये। और मुझे बताएंगे डिस्कंटेंट के क्या स्पेलिंग होते हैं? DISCONTENT। इमुलेट के क्या स्पेलिंग है? EMULATE। एमुलेट। स्पेलिंग भी याद किया करें अख्तर, स्पेलिंग के बगैर तो शॉर्ट हैंड का फायदा ही कोई नहीं है। जी सर। तो बताएं मुझे स्पेलिंग ग्रोइंग के क्या है? GROWING। चलें ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट लिखें जरा, स्पेलिंग की तरफ तवज्जो दीजिए जरा। However, comma, the impact on the local residents is evident enough, full stop. While the people of the province are worried and upset at the attacks, comma, they are also wary of the possibility of large scale operations to eliminate militants, full stop. Indeed, comma, the residents are fearful of the threat the TTP can pose, comma, as evident in the large, comma, seemingly spontaneous, comma, protests held earlier this year in different parts of the province. When the attacks gained momentum, full stop. Such was the sentiment that most of the parties active in the province took part in these protests, comma, ranging from the PTI to ANP, comma, to peace movements such as the PTM, full stop. तो ये मुझे पढ़ के सुनाएंगे कौन भला? हमार भट्टी पढ़ कर आप लिखिएगा। However, comma, the impact on the local residents is evident enough to show while the people of the province are worried and upset at the attacks, comma, they are also wary all the possibility of large-scale operations to eliminate militants. Indeed, comma, the residents are fearful of the threat that TTP can pose, comma, as evident in the large, comma, seemingly spontaneous, comma, protests held earlier this year in different parts of the province. When the attacks gained momentum, such was the sentiment that most of the parties active
in the province took part in these protests, ranging from the PTI to AMP, peace movements such as the PDM system. अच्छा ठीक है शाबाश, मैंने तो एक गलती नोट की, अभी पी से पहले जो टू आया था ये नहीं पढ़ा आपने, तो बाकी तो ओवरऑल मुझे कोई गलती नहीं नजर आई। आप मुझे कुछ स्पेलिंग मीनिंग बताइएगा जरा। तो स्पॉन्टेनियस के स्पेलिंग क्या थे? Spontaneous, SPONETONEOUS. TANEOUS, रिपीट कीजिए जरा स्पेलिंग। SPONTANEOUS. स्ट्रोक किस तरह डाली आपने? S सर्कल, P ऑफ N की ऊपर, N पूरा और S पूरा। हाँ ठीक है शाबाश, एस सर्कल है, पी हाफ, एन की ऊपर। आगे एन पूरा डाल के सर्कल लगा दें या पूरा ज्वाइन कर दें, दोनों तरह से ठीक है। ये स्पेलिंग बताएंगे मोमेंटम के क्या स्पेलिंग है? MOMENTUM. गेंड के क्या स्पेलिंग है? GAINED. क्या होता है मीन इसका गेंड का? हासिल करना। हाँ, हासिल होना या फायदा होना, दोनों मीनिंग ठीक है अपनी अपनी जगह पे। तो मुझे बताएंगे स्पेलिंग इसके क्या होंगे सेंटीमेंट के? SENTIMENT. तो जज्बे को कहते हैं सेंटीमेंट जो है। जी। अच्छा, तो इसकी स्ट्रोक किस तरह डाली आपने? S सर्कल, N हाफ और आगे N हाफ। यानी सेंट की स्ट्रोक डाल के आगे फिर एन को हाफ कर दिया मेंट के लिए। जी ठीक है। अच्छा, तो उसके आगे मैं लिखवा रहा हूँ, जरा पैराग्राफ लिखिएगा। However, it is important to note that these protests were not just against the TTP's return, but also against the possibility of further operations by the state full stop. Having suffered displacement and the destruction of their homes in the past, the people of KP are not keen on a repeat of the experience full stop. This is not lost on the parties active in the area full stop. Along with the fears of the people, the security situation has also impacted the police force in KP full stop. तो ये पढ़ के सुनाएंगे जरा पैराग्राफ मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने लोगों ने हैंड रेज कर दिए, बड़े जोशीले लोग हैं, सारे पढ़ना चाह रहे हैं ये ना। तो आलिया पढ़ दें बेटे इसको। Yes, sir. However, it is important to and these protests were not just against the TTP return, but also against the possibility of further operations by the state full stop, having suffered the displacement and the destructions of their homes in the past. The people of KP are not keen on a repeat of the experience full stop. This is not lost on the parties active in the area full stop, along with that the fears of the people, the security situation has also impacted the police force in KP full stop. ठीक है शाबाश बेटे, एक गलती आपने की है। ANP के बाद जहां पे दो पार्टियां आई थी, PTI टू ANP, उसके बाद कॉमा था, कॉमे के बाद टू जो आया था ये आपने नहीं पढ़ा। इसके थोड़ा सा आगे जाएगा, एक दो लाइनें आगे, इम्पोर्टेंट टू नोट को आपने नीड पढ़ दिया था, तो यही दो गलतियां आपने की है इसके अंदर। अब मुझे बताने स्पेलिंग आपने डिस्प्लेसमेंट के क्या स्पेलिंग है? DISPLACEMENT। डिस्ट्रक्शन के स्पेलिंग बताइएगा। DESTRUCTION। इसकी तबाही है तो स्ट्रोक बता दीजिए। सर D और सर्कल के साथ TR। हाँ, TR के साथ शन, ठीक है शाबाश। अच्छा, एक्सपीरियंस के क्या स्पेलिंग होते हैं? EXPERIENCE। पॉसिबिलिटी की स्ट्रोक किस तरह डाली थी? सर T के साथ S सर्कल और B डिसजॉइन किया था। अच्छा, मुझे बताएं मूवमेंट्स की स्ट्रोक किस तरह बनाई है आपने? सर वो अंडर द लाइन जो मेंट लिखते हैं। हाँ, उसके अंदर सर्कल नहीं लगाया आपने? सर जी लगाया। अच्छा ठीक है,
चले नेक्स्ट लिखते हैं जरा पैराग्राफ, ठीक है, शाबाश। At the receiving end of many terrorist attacks, the police have borne the brunt of the situation, full stop. What complicates matters is the sophisticated equipment being used by the TTP in attacks, placing law enforcement personnel at a distinct disadvantage, full stop, that the police force is as frustrated by the attacks as are the people, was evident from the protest the force held after the attack in Peshawar in February, full stop. There may have not been another protest since then, but to assume that its reservations and worries have been addressed would be foolish, full stop. हाँ, मोहम्मद अहमद पढ़ दीजिए जरा इसको। सर आवाज सही आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, पढ़िए जरा। At the receiving end of many terrorist attacks, the police have borne the brunt of the situation, full stop. What complicates matters is the sophisticated equipment being used by the TTP in attacks, placing law enforcement personnel distinct disadvantage, full stop. That the police force is as by पास कर दें, अपना पास कर दें, प्रॉब्लम हो रही जरा आपकी तरफ से ना, आप हैंड फ्री चेंज कीजिए, प्रॉब्लम हो रही, काफी ज्यादा आवाज आ जाती है बीच में। आप अच्छा पढ़ रहे थे, एक गलती से आपने गलत प्रोनाउंस किया, वो लफ्ज था ब्रंट, जिसको आपने बंट पढ़ दिया था। तो गलती तो आपने एक ही की, पढ़ भी बहुत अच्छा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम आपके हैंड फ्री की तरफ से, इसलिए मैं आगे नहीं सुन रहा हूँ आपसे। तो यही पैराग्राफ जो है मैं दोबारा से किसी और से सुन लेता हूँ जरा, तो जवाब पढ़ दीजिए जरा इसको ना। जी सर जी। At the receiving end of many terrorist attacks, the police they burned the brunt of the situation, full stop. Have What born, complicates they नहीं है ये, have born। जी सर जी। Have burned the brunt of the situation, full stop. What complicates matters is the sophisticated equipment being used by the TTP in attacks, placing law enforcement personnel at a distinct disadvantage, full stop. That the police force is as frustrated by the attacks as are the people was evident from the produced the force protest, आगे पढ़िए। held protest the force held if the attack in Peshawar in February, full stop, there may have not been another protest since then, but to assume that its reservations and worries have been trust would be foolish, full stop. ये भी एड्रेस का लफ्ज है, तो आपने गलतियां जो टोटल 4 गलतियां आपने कर ली हैं। एक जगह पे हैव की गलती की आपने, दे पढ़ दिया था, एक जगह प्रोटेस्ट को प्रोड्यूस पढ़ दिया था, आफ्टर एक जगह पे आया था तो इफ पढ़ दिया था, अभी एड्रेस को शायद आप ट्रस्ट पढ़ रहे थे, तो यही 4 आपने गलतियां की हैं। अब मुझे स्पेलिंग बताने हैं आपने, फुलिश के स्पेलिंग क्या होते हैं? FOOLISH। फ्रस्ट्रेटेड के क्या स्पेलिंग है? FRUSTRUTATD। ये स्पेलिंग ठीक कर लें आपने, FRUSTRATED। फ्रस्ट्रेट से फ्रस्ट्रेटेड एंड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट कहते हैं मायूस होने को, मायूस करने को। आप बताएंगे सोफिस्टिकेटेड के क्या स्पेलिंग है? SOPHISTICATED। सोफिस्टिकेटेड, नफीस। नफीस। इक्विपमेंट के क्या स्पेलिंग है? EQUIPMENT। टेररिस्ट अटैक्स के स्पेलिंग मीन बताइए जरा। TERRORIST, टेररिस्ट, ATTACKS, टेररिस्ट अटैक्स। सर जी ये हमले, दहशतगर्द हमले ना, दहशतगर्द हमले हैं, दहशतगर्द हमले जी सर। और कॉम्प्लिकेट्स, COMPLICATES, कॉम्प्लिकेट्स, पेचीदगियां। हाँ, पेचीदा कर देना, उलझा देना, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट लिखें जरा। मैनी
feel the security concerns are a critical factor in the growing distrust between the people of KP and the state, full stop, as one journalist put it, comma. The people feel abandoned and are skeptical of any effort or move by the state, full stop. Economic hardship doesn't help, comma. But while that is a phenomenon, the entire country is dealing with, comma, in KP it is being matched by the insecurity caused by terrorism, full stop. It is in this context that the TTP's strategy should be viewed, full stop. तो शाहजेब आप पढ़िए जरा इसको भाई, बहुत हैंड रेस करते हैं बच्चे, बहुत पढ़ने का इनको शौक है ये ना। जी सर। और सर से आगे भी चलो, पढ़ के भी सुना दो कि जी सर कह के अब बस काम पूरा हो गया। कर लो गाल, ये ना मुझे पढ़ नहीं रहना, मैं नहीं सुनता आपसे, मैं किसी और से सुनूंगा अपना जो है ना। इशरत आप पढ़िए जरा इसको। जी सर। Many feel the security concerns are caretaker factor in the growing distrust between the people of KP and the state, full stop. As one journalist put it, comma, the people feel abandoned, the skeptical, and any effort or a move by the state, full stop. Economic hardship doesn't help, but while that is a phenomenon, the entire country phenomenon the entire country is dealing with in KP. It is matched by the insecurity caused by terrorism, full stop. It is in this context that the TTP's strategy should be viewed, full stop. हाँ ठीक है बेटे, दो जगह पे गलतियां की, एक तो बीइंग मैच्ड से पहले लफ्ज बीइंग आपने गलत किया, अबेंडन के बाद दो अल्फाज आपने छोड़े हैं, एंड आर स्केप्टिकल, तो ये स्केप्टिकल से पहले दो अल्फाज जो थे वो आपने मिस कर दिए। आप मुझे स्पेलिंग बताने हैं, स्केप्टिकल के क्या स्पेलिंग है? SCEPTICAL। क्या मीन होता है इसका? वहमी। हाँ वहमी को कहते हैं। अबेंडन के स्पेलिंग मीनिंग क्या? ABANDONED। अबेंडन का मतलब क्या होता है? तर्क किया गया। अबेंडन का मतलब है छोड़ देना, आजाद कर देना, तर्क कर देना, ठीक है ना। अबेंडन का मतलब फिर क्या हुआ? तर्क किया हुआ, आजाद किया गया, ठीक है, छोड़ा गया होगा। जर्नलिस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं? JOURNALISTS। सहाफी। हाँ सहाफियों को कहते हैं। अच्छा, डिस्ट्रस्ट? DISTRUST। क्या मीनिंग होता है इसका? बेयकीन। इत्मीनान को कहेंगे ना, जिसके ऊपर इत्मीनान ना हो, भरोसा ना हो, डिस्ट्रस्ट। और मुझे बताएं फिनोमिनन के स्पेलिंग मीनिंग क्या होते हैं? PHENOMENON। अजूबा क्या होता है? अजूबा। अजूबा, अजूबा किसको कहते हैं? जो कुदरत की तरफ से अजीब काम हो जाए उसको हम अजूबा बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि इसकी जमा क्या होती है? फिनोमिना। फिनोमिनन की जमा क्या होती है? फिनोमिना। लास्ट पे ए आ जाएगा। अब स्ट्रोक किससे डाली आपने इसकी? FN हुक और N के साथ फिर N की हुक। अच्छा ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लिखते हैं जरा, माइक ऑफ कर दें, आपकी प्रॉब्लम हो रही है हैंड फ्री के अंदर। An additional factor is the challenge presented by FATA's merger with the province, full stop. Due to a number of reasons, comma, the administrative challenges which arose since the merger have not been effectively addressed, full stop. Financial constraints have been a major reason, especially because of the lack of consensus on the NFC share, comma, which was to be agreed on by all the provinces, full stop. As a result, comma, the state's infrastructure has not been extended to the region, full stop. An example of this is that dispute resolution
has become difficult, full stop. हाँ भाई, आप सिद्रा पढ़ दें बेटे इसको। जी सर, an additional factor is the challenge presented by FATA mergers with the province full stop out to a number of regimes, comma, the administrative challenges which are all दा के since बाद क्या merger पढ़ा बेटे? have दा not के बाद क्या been पढ़ा? थोड़ा सा effectively ऊंची पढ़े जरा ना, ऊंचा भी पढ़े, थोड़ा सा क्लियर भी करें जरा। sir the administrative challenges अच्छा, आगे पढ़े। which arose since the merger have not been effectively addressed. Full stop. Financial constraints have been a major reason, especially because of the lack of consensus on the NFSC share, which was to be agreed on all by provinces. Full stop. As a result, the state infrastructure has not been extended to the region. Full stop. An example of this is that dispute result has become difficult. Full stop. बेटे एक तो अभी अभी रिजल्ट जिसको पढ़ा, ये रेजोल्यूशन था लफ्ज, रेजोल्यूशन। जी जी ये गलती की है। इससे ऊपर आपका बाई आल आया था, तो आपने बाई आल से आल बाई नहीं पढ़ा था, यहाँ पे ऑन बाई आल था, यहाँ पे आपने गलती की है। मेजर को आपने मर्जर पढ़ दिया, तो ऊपर ये गलती की आपने। ऊपर पहली लाइन के अंदर आपने ड्यू टू ए नंबर ऑफ था, जहां पे ड्यू को आल पढ़ दिया था, ये भी गलती आपने की थी। तो टोटल मिला के ये आपकी 4 गलतियां हुई है ये वाली। तो मुझे स्पेलिंग बताइएगा आपका, फिनेंशियल के स्पेलिंग क्या होते हैं? FINANCIAL। कंस्ट्रेंट्स के क्या स्पेलिंग होते हैं? CONSTRAINTS। दोनों का मेन क्या बनेगा? माशी रिकॉर्ड। माली मुश्किलात कह लें आप, मुआशी भी कह देंगे तो तब भी ठीक है। माली मुश्किलात है। एडमिनिस्ट्रेटिव के शॉर्ट स्टॉक किस तरह डालती हैं आप? सर डी के साथ वी के होगा। डी डबल करके बेटे वी को, हाँ ये नहीं डी केले के साथ नहीं, डी केले के साथ लगाओगे तो एडवांटेज बन जाएगा ये। जी सर, डी को डबल करके फिर मर्जर के स्पेलिंग क्या होते हैं? MERGER। किसको बोलते हैं? सर इंजमाम जम करने हाँ, वाले को। इंजमाम यानी जम करने को, जोड़ने को, इकट्ठा करने को, मिलाने को। जी सर। और मुझे बताएं इफेक्टिवली की स्ट्रोक किससे डाली है? सर FKT और VL सीरीज। हाँ, VL सीरीज है, यानी F ऑन द लाइन के टी डाल के VL सीरीज डाल दिया आपने। जी सर। ठीक हो गया। एज ए रिजल्ट की भी फ्रेजिंग की थी या अलग-अलग बनाई थी? सर एज के साथ ही आर अपवर्ड, फिर एस सर्कल और अल हाफ। ठीक है, ये स्ट्रोक अगर एज के साथ रिजल्ट को ज्वाइन किया तो ठीक है ये, लेकिन कुछ शॉर्ट स्ट्रोक इसकी है जो एज के साथ अगर एल केला ही हाफ कर दें ऊपर को, तो यानी आर ना डालें, तो ये भी स्ट्रोक शॉर्ट है एज रिजल्ट की। अगर माइंड में ये बैठ जाए चीज तो बनाना है, अदरवाइज आप पहले वाली स्ट्रोक बनाते रहे एज रिजल्ट जो बना रही हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रोक किस तरह डाली थी आपने? सर NF और एस सर्कल और के को डबल किया है। किसको कहते हैं ये? सर ढांचा, ढांचे को कहते हैं। ठीक हो गया, शाबाश। चलें रेडी, नेक्स्ट लिखिएगा जरा। colleagues point out that the TTP is once again trying to mediate for the quick resolution of disputes, full stop. However, these are issues limited to one part of the province. They need immediate attention because this is the area where the militants entrenched themselves the last time, full stop. And if the alienation is not addressed, the forces which can take advantage of it will prove dangerous for the entire country, full stop. तो ये पैरा पढ़ के सुनाएंगे जरा। सादिया आप बेटे पढ़ दीजिए जरा इसको। जी सर जी। Colleagues point out that the TTP is once again during the mediator for the quick resolution of disputes, full stop. However, these are issues limited but
one part of the province, they need immediate attention because themselves this is the area where the militants entrenched themselves the last time of post and if their alienation is not addressed, the forces which can take advantage of it will prove dangerous for the entire country, full stop. ठीक है शाबाश बेटे, एक गलती, लिमिटेड के बाद टू आया था तो आपने कुछ और पढ़ा था, ये आपको पता हो आपने क्या पढ़ा, इश्यूज आर लिमिटेड टू वन पार्ट, यहाँ पे जो टू आया था, तो बाकी ओवरऑल ठीक है, आपने दा पढ़ दिया था, तो ये एक गलती आपसे हुई है। एलियनेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं? एलियनेशन ALIENATIO। हाँ, ये इंतकाल को कहते हैं, ये हाँ इंतकाल को कहते हैं, ठीक है ना। और मुझे बताएंगे स्पेलिंग मेडिएट के क्या होते हैं? MEDIATE, सालसी करना। हाँ, सालसी करना, ठीक है ये। और मुझे स्पेलिंग बताएं आप, कुलीग्स के क्या स्पेलिंग होंगे? COLLEAGUES। GUES है ना? जी सर जी। एंट्रेंच्ड? ENTRENCHED। तो एंट्रेंच का मतलब क्या होता है? गड़ा खोदना या खंदक खोदने को कहते हैं ये। जी सर। और एडवांटेज की शॉर्ट फॉर्म बताइएगा किस तरह है? ऑन द लाइन D और JR सीरीज। above the line D और V की होकर। एडवांटेज जी सर, above the line D, सॉरी। डेंजरस के स्पेलिंग क्या होते हैं? DANGEROUS। अच्छा, इसकी स्ट्रोक किस तरह होती है? सर जी ऑन द लाइन D JR सीरीज और साथ S पूरा। एस पूरा शॉर्ट फॉर्म हुई है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं जरा। ठीक है, शाबाश। Last but not least is the larger political situation in the province, where the bulk of the political support is enjoyed by the PTI, electorally, or peace organizations such as the PTM, full stop. The rest of the parties, now expected to return to power whenever elections are held, are not seen to enjoy widespread support, full stop. This strategy needs to be viewed in the larger context of KP rather than simply the issue of PTI and its undesirability, full stop. But that is not happening, full stop. If earlier the entire focus was on providing support to the PDM parties, such as the JUIF and ANP, it now seems that hopes are being placed on Parvez Khattak, who is rumored to enjoy access to the new caretaker setup and, in his interactions with journalists, appears confident of a bright future, full stop. तो जैन, आपने नहीं लिखा ये पैरा? नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। याद आप पढ़ दें जरा इसको। सर मैं पढ़ दूं सर? हाँ, मत पढ़ दें, आप खराबी नहीं करनी, आपने ये सुन लें जरा। जी सर। Last but not least is the larger political situation in the province, where the bulk of the political support is enjoyed by the PTI, electorally, or peace organizations such as the PTM, full stop. The rest of the parties, now expected to return to power whenever elections are held, are not seen to enjoy widespread support, full stop. This strategy needs to be viewed in the larger context of KP rather than simply the issue of PTI and its undesirability, full stop. But that is not happening. If earlier the entire focus was on providing support to the PDM parties such as the JUIF and ANP, it now seems that hopes are being
placed on Parvez Khattak, who is rumored to enjoy access to the new caretaker setup, in his interactions with journalists, appears confident of a bright future, full stop. चलें ठीक है शाबाश, गलती तो मुझे कोई नहीं नजर आई आपकी, तो बीच में से हल्की फुल्की वो साउंड आ रही है अभी, तो मुझे स्पेलिंग बताइएगा। इलेक्ट्रोरली की स्पेलिंग क्या थे? ELECTORALLY। अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए फ्रेजिंग किस तरह किया आपने? सर PL हाफ के के साथ वो शन, KL के साथ जीशान की मरोड़ी। हाँ जी, जीशन की मरोड़ी। बलक का मीन क्या होता है? बल्क, सर जी BUL के बल्क, ये कहते हैं ये काफी को कहते हैं, काफी बहुत ज्यादा को कहते हैं ये। जी सर। अनडिजायरेबिलिटी। UNDESIRABILITY, अनडिजायरेबिलिटी, नापसंदीदा। अच्छा, इंटरेक्शंस। INTERACTIONS, इंटरेक्शंस। सर इसका आमना सामना कहते हैं या सलाम दो चलें अब हम या वाकफी। ठीक है, ये मुझे बताएं जर्नलिस्ट के स्पेलिंग क्या है? JOURNALISTS। कॉन्फिडेंट के क्या स्पेलिंग है? CONFIDENT। रूमर्ड के स्पेलिंग क्या होते हैं? RUMOURED। क्या मीनिंग होता है इसका? सर ये अफवाहें। अफवाहें फैलाना, रूमर अफवाह को कहते हैं ये। जी एक्सेस के सर। स्पेलिंग क्या होते हैं? ACCESS, रसाई। रसाई वाला, पहुंच वाला, ठीक है शाबाश ना। तो लास्ट पैराग्राफ है, लिखिए जरा पे। However, this unhealthy focus on the political situation over security matters can have unforeseen ramifications, full stop. If there is already a sense of alienation or distrust among the people, will it be aggravated or addressed by an election result which brings to power forces that don't enjoy popular support, question mark. For at some stage, there will be a need to address the security challenge in the province, which is not possible without the local people's support, full stop. The battles at the top may be important, but strategies shouldn't be planned without taking into account public sentiments, full stop. One can only hope someone has their ear to the ground as well, full stop. तो साइमा है कि चली गई भाई? समरा आप पढ़ देती हैं। This unhealthy focus on the political situation over security matters can have unforeseen. सर यहाँ से वर्ड मिस हुआ है। इफ देयर इज ऑलरेडी a sense of alienation of distrust among the people, will it be aggravated or addressed by an election result which forces that don't enjoy that ये था enjoy popular sport far at some stage, there will be a need to address the security challenge in the challenge in the province. It is not possible without the local people's support. First of all, battles at the top may be important, but strategies shouldn't be planned without taking into account public sentiments. First of all, one can only someone has their ear to the ground of well, full stop. One can only के आगे पढ़िए जरा।
One can only hope someone has their ear to the ground as well. Full stop. अच्छा ठीक है, 4 गलतियां मैंने नोट की हैं आपकी। रेमिफिकेशन आपसे नहीं पढ़ा गया था, लफ्ज रह गया था। पावर लफ्ज आपने गलत किया, पार जो गलत किया था। डोंट आपसे नहीं पढ़ा गया था, विच को आपने इट पढ़ दिया था। ये भी गलतियां मैंने आपकी नोट की हैं। एक लफ्ज एग्रेवेटेड था जिसको आपने एग्रीवेटेड पढ़ा था, इसको ठीक तरह से प्रोनाउंस करना होगा आपने। अब स्पेलिंग बताएं इसके क्या थे एग्रेवेटेड के। AGGRAVATED। क्या मीनिंग होता है इसका? जारहाना सर जी। वो बेटे जारहाना इस एग्रेसर होता है, वो क्या होता है? एग्रेसर को कहते हैं। ये है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। जी सर। अनफोर्सीन। UNFORESEEN अनफोर्सीन, पहले से नाम मालूम। जिससे पहले ना देखा गया हो, जिससे पहले जिसके बारे में ना मालूम ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनफोर्सीन। अनहेल्दी के जी सर। क्या होते सर आवाज कट गई। हैं? अनहेल्दी के स्पेलिंग क्या है? UNHEALTHY। रेमिफिकेशंस के क्या स्पेलिंग है? RAMIFICATIONS। क्या होता है रेमिफिकेशंस, तरसीलात। तरसीलात नहीं होता, रेमिफिकेशन कहते हैं जोक दर जोक को। किसको कहते हैं ये? जोक दर जोक। हाँ, तो उसके बाद मुझे आपका प्रॉब्लम इंटरनेट का, माइक ऑफ कर दें अपना। तो मैं एक दो पैराग्राफ थोड़ी सी तेज स्पीड में लिखवाऊंगा अब, तो कोशिश कीजिएगा जरा अटेम्प्ट करने की। However, the impact on the local residents is evident enough, full stop, while the people of the province are worried and upset at the attacks, they are also wary of the possibility of large-scale operations to eliminate militants, full stop. Indeed, the residents are fearful of the threat the TTP can pose, as evident in the large, seemingly spontaneous, protests held earlier this year in different parts of the province when the attacks gained momentum. Full stop. हाँ भाई, तस्लीमा पढ़ दें जरा इसको। जी सर। However, impact on the local residents is evident in a full stop, while the people of the province are worried and upset at the attacks, very they are also wary of the possibility of large scale operations to eliminate militants. Full stop. Indeed, the residents are fearful of the threat the TTP can pose, as evident is the large, seemingly, spontaneous, protest held earlier this year in different parts of the province when the attacks gained momentum. Full stop. चलें ठीक है, शाबाश, नेक्स्ट लिखिएगा जरा। Last week, after the day-long high drama surrounding the cable chair rescue, a press release from the Tehreek-e-Taliban Pakistan began doing the rounds on social media. Full stop. It praised the local residents who were part of the rescue mission, and announced a cash award for them. Full stop. So bizarre is the press release that people such as myself thought it was fake. Full stop. However, since then, I have spoken to journalists who cover these issues and they confirm it is a genuine. Full stop. अरसलान पढ़े जरा इसको भाई। जी सर। Last week, after the day-long high drama, सर ये क्या था? Surrounding cable chair rescue, a press release from the Tehreek-e-Taliban Pakistan began doing the round on social media. First up, it praised the local residents who were part of the rescue mission, and announced a cash award for
they so bizarre is the sir For them. For them, so bizarre is the press release that people uh, such as myself बता रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही मेरी। myself सर वो कॉल आ गई थी। myself thought it was fake full stop, however comma since then comma I have spoken to journalists who cover these issues and they confirm it's a genuine full stop। चलें ठीक है, शाबाश, कोई गलतियां होगी दो चार। नेक्स्ट लिखिए जरा, in fact, comma, colleagues point out that the TTP in its present reincarnation seems to be doing a lot more than just enjoying the sophisticated weaponry left behind by the Western forces during their quick exit from Afghanistan. The organization has also learnt the importance of winning over the public and are now trying to craft a social agenda full stop. Apparently, it even released a statement on the migrants ship that went down full stop. हाँ भाई, हाँ पढ़िए, हम दस रहे इसको। In fact, colleagues point out that the TTP in its present reincarnations seems to be are doing a lot more than just in which the sophisticated weaponry left behind open Western forces during their quick exit from Afghanistan. The organization has also learned the importance of winning other people and are now trying over the public and are now trying to craft a social agenda full stop. Apparently, it even released a statement on the immigrants ship that went down full stop. Immigrants नहीं था, migrants था ये वाला, migrants। महाजर। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड पे लिखाऊंगा। ये बच्ची एक मदीखा बशीर मुझे नजर आ रही थी, पता नहीं मौजूद है या नहीं है इस वक्त। है मौजूद। तो लिखिए जरा पैरा, however, the impact on the local residents is evident enough full stop. While the people of the province are worried and upset at the attacks, they are also wary of the possibility of large-scale operations to eliminate militants full stop. Indeed, the residents are fearful of the threat the TTP can pose, as evident in the large, seemingly spontaneous, protests held earlier this year in different parts of the province. Then the attacks gained momentum. Full stop. मदीहा पढ़े बैठे इसको। However, the impact on the local residents is evident enough full stop. While the people of the province are worried and upset at the attacks, they are also wary of the possibility of large scale operations, election militants full stop. Indeed, एक तो ये कॉमा जिसको पढ़ा ये 2 है, दूसरा एलिमिनेट है जिसको इलेक्शन पढ़ रही हैं, तीसरा लफ्ज वेरी आया था, वेरी नहीं आया था, आपने ये भी गलत किया। तो ये 3 गलतियां आपकी इसी लाइन के ऊपर हुई हैं, उससे पहले कोई नहीं थी। Indeed, the residents are fearful of the threat TTP can pose, as evident in the large, seemingly spontaneous, protests held earlier this year in different parts of the province when the attacks gained momentum. हाँ ठीक है, शाबाश। गेंड का स्पेलिंग बताइए मुझे। GAINED। मोमेंटम के स्पेलिंग क्या है? MOMENTUM। अच्छा अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं स्पेलिंग आप इसके क्या होंगे, ऑपरेशंस के। ऑपरेशन के स्पेलिंग
OPERATIONS. एलिमिनेट के क्या स्पेलिंग है? ELIMINATE. और स्पॉन्टेनियस के स्पेलिंग क्या है? SPONTANEOUS. हाँ बेटे, माइक थोड़ा करीब का में, कभी तो आवाज अच्छी आ रही होती, कभी बिल्कुल डाउन हो जाती है। अच्छा, सेंटीमेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं? सर किसके? सेंटीमेंट? SENTIMENT. अच्छा चलें ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट लिखते हैं जरा पैराग्राफ को। Last but not least is the larger political situation in the province, where the bulk of the political support is enjoyed by the PTI, electorally, or peace organizations such as the PTM, full stop. The rest of the parties, now expected to return to power whenever elections are held, are not seen to enjoy widespread support, full stop. This strategy needs to be viewed in the larger context of KP rather than simply the issue of PTI and its undesirability, full stop. हाँ, किसी की अगर बारी नहीं आई तो वो पढ़ना चाह रहा हो गई, वो पढ़े जरा आप इसको। मैं पढ़ दूं सर जी? अब पढ़ दो, पहले ही आप रो रही हो, पढ़ना क्या है तुमने? आवाज तो निकल नहीं रही है आपकी। Last but not least is a larger political situation in the province, whether the bulk of the political support is enjoyed by the PTI, electorally, or peace organizations such as the PTM, full stop. The rest of the authorities parties, now expected to return to power whenever elections should held are not आर हेल्ड seen शुड to नहीं, आर इतना बड़ा होता है, चार शुड को जोड़े ना तो फिर जाके एक आर बनता जाके। J are held are not seen to enjoy widespread support, full stop. This strategy ends to be viewed नीड्स, ये in क्या the लफ्ज़ है? नीड्स। needs to be viewed in the larger context of KP rather than simply the issue of the PTI and its undesirability, full stop. चलें ठीक है, अब मैं लॉन्ग हैंड के लिए एक पैरा दे रहा हूँ, जरा उसकी कीजिए लॉन्ग हैंड को। रेडी हो जाए। Those familiar with the issue say the group is trying to emulate the Afghan Taliban in organizational matters and reaching out to the populace, full stop. So far, there is little indication they are making any headway in winning over the people, full stop. However, this may change, as discontent in the province is growing due to several reasons, according to those who keep a close eye on the situation, full stop. A major factor is the security situation, which continues to deteriorate day by day, full stop. Incidents take place on a daily basis, even though not all of them are, fortunately, big enough to catch the attention of the press, full stop. New para, however, the impact on the local residents is evident enough, full stop. While the people of the province are worried and upset at the attacks, they are also wary of the possibility of large-scale operations to eliminate militants, full stop. लो ये कीजिए जरा इसको लॉन्ग हैंड को। सबसे पहले मुझे गलतियां बताएंगे वलीद अहमद। सर जी कोई भी नहीं। कोई गलतियां, एरर फ्री हुआ है, वेरी गुड। मुबीन इकबाल, आप बेटे बताएं कितनी गलतियां की हैं?
एक मिस्टेक हुई है, जी बेटे, एक मिस्टेक हुई है सर जी। एक मिस्टेक। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, शाबाश। शबाना आप बताइए जरा। शबाना कौसर माइक ऑन करके बताइए। सर बेटे समझ नहीं आ सर रही। मैंने ना पॉपुलेस से लिखा था। अच्छा सर फिर। मैंने पॉपुलेस से लिखा था, वो कॉल आ गई थी, वहां पे 2 मिस्टेक हैं, बस उससे आगे 2 मिस्टेक। अच्छा बाकी ठीक है सारा ना। सर बाकी ठीक। फौजी आप बताइए जरा। सर मेरी 5 मिस्टेक्स हैं। 5 मिस्टेक्स हैं। अच्छा नीस अकरम आप भी। सर मेरी 4 गलतियां। 4 गलतियां हुई हैं। अमार भट्टी आपकी कितनी हुई हैं? 2। 2, वेरी गुड। सिदरा बर्ग अशोकत आप बताइए जरा। सर 4। 4 हुई हैं। जवाद अफजल आप बताइएगा। जी 3। और इशरत हफीज आपकी कितनी हुई हैं? 3 सर। 3 हुई हैं। समरा फरीद आपकी। सर जी मेरी 7 गलतियां हुई हैं। ज्यादा की हैं बेटे, 7 गलतियां हुई हैं। तो आलिया डॉल आप बताइए कितनी है? सर मेरी 2 है। 2 हैं। शाबाश। मोहम्मद अहमद। सर 1 है। 1 है। ठीक है, शाबाश। शाहजेब अरशद। ठीक सर जी। कितनी गलतियां भाई? 6 सर जी 6। 6 गलतियां हुई हैं। मुदस्सर आपकी कितनी हुई हैं? सर जी 5। और सादिया आपकी कितनी हुई हैं? सर जी 3। 3 हुई हैं। अरसलान यूनुस आपकी। सर जी 2। 2 हुई हैं। ठीक है, शाबाश। अख्तर एंड राना आमर आप बताइएगा जरा। सर 4 हुई हैं। 4 हुई हैं। तो राना आमर की कितनी है? सर मेरी 8 हुई हैं। 8 हुई हैं। राना आपकी ज्यादा हो गई हैं यार। अजीमा आप बताइए जरा। सर मेरी 3 हुई हैं। 3 हुई हैं। अच्छा। और ईसानुल्लाह आप? सर जी 2 हैं। 2 हुई हैं। फयाज आपकी कितनी हुई हैं? 5 हुई हैं सर जी। 5 हुई हैं। फीज अहमद आपकी क्या सूरत आ रही है? सर जी 2 हुई हैं मिस्टेक। 2 हुई हैं। ठीक है, शाबाश। जवाद अहमद या जी जवाद सर। पटवारी कह लेते हैं मैं। जी सर मेरी 20 हुई हैं। माशाल्लाह, पहले दिन आया ना। चलो 20 हो गया, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। तो अपना काशिफ अली आपने क्या किया भाई? 10 सर जी। अच्छा। और मुझे बताएंगे राशिद महमूद क्या सूरत आ रही है? सर जी 3 हुई है। 3 हुई है। ठीक है, शाबाश। जी। और मुझे बताएं सद्दाम हुसैन। 5 सर जी। 5 हुई है। के बाद मुझे बताएंगे ये न्यू बच्ची जो है क्या नाम है इसका, जुनैरा अब्बास। जी सर जी 5 हुई हैं। 5 गलतियां। जी सर। बेटे मैं तो आवाजें देता रहा हूँ, आपने मुझे जवाब ही कोई नहीं दिया था। मैं सुनना चाह रहा था आपसे कुछ। सर ना सर मैं क्लास में थी शायद, आपने मुझे नहीं आवाज दी। नहीं बेटे, आपने माइक नहीं ऑन किया। मैंने 2 बार आवाजें देता रहा हूँ आपसे। चलें बहरहाल। तो ठीक है, आज ओवरऑल रिजल्ट मुझे ठीक लगा। एक दो जवाब का प्रॉब्लम था, वो पहले दिन क्लास ज्वाइन की, काफी देर अनटच रहे हैं, वो इस वजह से ज्यादा गलतियां हुई हैं। तो बाकी ओवरऑल आज अच्छा रिजल्ट है ये। तो नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद है कि और भी गलतियां कम होंगी ये वाली। तो इसी के ऊपर हम मीटिंग को लीव जी करते सर। हैं। और सर जी मुझे ना वो ऑनलाइन ग्रुप क्लास के ग्रुप में ऐड कर दें। इसमें ये ग्रुप में अंदर ऐड कर दूं, व्हाट्सएप के अंदर? जी सर जी। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ आपको ऐड। और किसी का क्वेश्चन हो, कोई जी चीज इन्फॉर्मेशन को लेना चाह रहा हो? जी सर। जी। सर एक वर्ड है ब्लैक हाउस। ब्लैक हाउस। ब्लैक्स हाउस सर, इसमें जिस तरह पोस्ट ऑफिस में आता है, इसमें पूरा वर्ड आया है ब्लैक्स, एस के बाद ऊपर कॉमा लगा हुआ है, तो सर ये कॉमा कब यूज होता है? बेटे ये कॉमा पोस्ट ऑफिस है, ये एस से पहले भी आता है, एस के बाद भी आता है। ये 2 सूरतों में आता है ये। अगर वो सीगा आपका सिंगुलर होगा जी तो सर। फिर एस से पहले कॉमा लगाएंगे एज ए मलकियत, यानी मलकियत जाहिर करने के लिए। लेकिन अगर वो आपका जी सर। सीगा जो है प्लूरल का होगा तो फिर एस साथ लगा के बाद में ऊपर कॉमा लगाएंगे, जो जमा को यूज करेगा, पोस्ट यानी मलकियत को भी जाहिर करेगा
और वो जमा को भी यूज करेगा, यानी प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो जी यानी सर, इसका मतलब ये होगा कि अगर तो कॉमा लास्ट में लगा हुआ है तो सीगा जमा का है, जमा के लिए मलकियत जाहिर की जा रही है। अगर वो इससे पहले कॉमा लगा के इसको बाद में लगाया गया तो फिर वाहद के लिए उसको मलकियत को जाहिर किया जा रहा है। ये पोस्ट ऑफिस के लिए यूज होता है ये। जी सर जी। और कुछ क्यों जानना चाह रहे हो? सर जी एक लफ्ज है मैनिफेस्ट, इसके मैनिफेस्टेशन की कोई शॉर्ट स्ट्रोक बता दें सर। देखें इससे शॉर्ट स्ट्रोक क्या हो सकती है कि मनी की स्ट्रोक डालें, उसके बाद एफ के साथ जेशन की मरोड़ी दे देंगे तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा ये। जी सर। और कुछ जानना चाह रहे हो भाई? जी सर। सर ये वर्ड आए थे जैसे JUIF होता है और इसके अलावा PWD आज पढ़ा था क्लास में, तो इस तरह के वर्ड्स को किस तरह कैरी किया जाता है स्पीड में? बेटे इसको कैरी इसी तरह किया जाता है कि जो एब्रीवेटेड अल्फाज होते हैं हम शॉर्ट हैंड के अंदर भी उनको एब्रीवेटेड लिखते हैं। जैसे अगर आप बात करें PWD की, तो P की स्ट्रोक डालेंगे, वे की स्ट्रोक डालेंगे और D की स्ट्रोक डालेंगे तो PWD इसको हम बोलेंगे। अगर ये पूरे अल्फाज बोले जाएंगे तो फिर हम इनको दो डैश नीचे लगाएंगे, अगर एब्रीवेट बोला जाएगा तो सिंगल डैश इनके नीचे लगा देंगे। तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे लिए ये आसानी हो जाती है कि इनको एब्रीवेट हमने करके लिखा था, ये ऑलरेडी एब्रीवेट लिखवाए, एब्रीवेट गया था ये। ओके सर। हाँ, और है किसी का क्वेश्चन नहीं है तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।